Okay, we already know that thermal properties means we already know that whenever we heat any object, whenever we increase the temperature of an object, the volume expands. Okay, there is an expansion that takes place in object. Okay, so other than water, which shows the anomalous behavior. Remember, water ka anomalous behavior we have done it in uh, 10th standard. What was the anomalous behavior? Below 4 degrees Celsius, instead of contracting, it expands. So वो anomalous behavior, उल्टा behavior दिखाता है. Otherwise, whenever we heat, whenever we increase the temperature, there is an increase in volume of an object. Okay, so we know that due to heat, the increase in volume takes place. Exactly what happens? For example, if I have a solid and if I heat this solid, okay, the internal energy of the solid increases. Okay, इसका atoms and molecule gains that heat, starts moving fast. That it is kinetic energy or the internal energy increases. It starts vibrating or its kinetic energy increases, and so its volume also expands. So every object, whenever we heat, it's going to expand. Other than anomalous behavior of water. Water shows the opposite behavior. We are not discussing about anomalous behavior of water. Now, you must have all seen the rail tracks. Now, rail tracks which are laid straight. Okay. Now these rail tracks are approximately 10 meters तक का रहेगा. Okay. Now each track is approximately 10 meter because बड़ा tracks रहता है. Now we are discussing the distance between the track. I am discussing this distance between the track. I am not discussing this distance between the track. मैं ये वाला distance की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं tracks के बीच में यानी length wise जो distance है उन दोनों tracks के बीच का I am discussing about that distance. Okay. You all must have seen, everyone must have seen that there is a gap. Always there is a gap left in the rail track. Can anyone explain this? Why this gap is left? Why this gap is left between the rail track? क्यों रखते हैं gap? Simple answer. अच्छा मैंने mute का option दिया है क्या नहीं? Sorry. So object expands, right? So when they expand, there should be some distance left. अगर ये gap नहीं रखा and it expands, what is going to happen? अगर ये gap नहीं रखा और वो expand कर रहा है, तो वो bend हो जाएगा and that's the reason derailment takes place. Derailment का main reason वही रहता है कि expansion का जगह नहीं है, ठीक है? Summer season में expand और expand का जगह नहीं आता है और वो derail हो जाएगा rail. Okay. So that's the reason this gap is kept. Now this is filled. यहाँ पे दोनों side में coupling लगाते हैं. बीच में प्लास्टिक वगैरह फिल अप कर देते हैं. ठीक है, so there is some room for expansion. Okay, so we already know that expansion takes place in everywhere. Okay, whenever you heat, expansion is going to happen. But there are three types of expansion that we are going to discuss about. One is a linear expansion, that is lengthwise expansion. One is aerial या फिर surface expansion, that is area wise expansion. And last is volume, that is volume wise expansion. Okay, so these are the three different types of expansion that we are going to discuss about. One is linear, aerial and volume expansion. Okay, now we'll start with the first topic. बहुत simple concept है ये, easy chapter है ये. Let's start with the first topic, that is linear expansion. Linear expansion and lengthwise expansion. जो अभी हमने rail track का example लिया ना, वो linear expansion का ही example है. Okay. Now let's take up linear expansion. Now, to understand about linear expansion, consider an object of length L, okay, which is at temperature T. Now, if I increase the temperature over here, obviously there is an expansion that taking place. You can see that अगर मैंने इसका temperature increase किया, तो there is an expansion that take place. Okay. So अगर ये object का length, समझो ये original length है, तो मैंने L0 लिया है, original temperature T0 या फिर 0 degree Celsius लिया हुआ है. Okay. Final length is L when the temperature is T.
So you can look into the diagram and understand that there is an expansion taking place. Lengthwise, original length ka final length. Lengthwise, there is an expansion that taken place. Okay. If I call this increase in length as delta L, and this increase in length has happened due to increase in temperature. यहाँ पे ओरिजिनली टेम्परेचर T0 या फिर 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे टेम्परेचर T था, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो गया है? डेल्टा T. Are you clear with this part? Yes. Yes, sir. Okay. So original length अगर मैंने L0 लिया है, after time temperature T expansion हुआ L del T temperature पे length becomes L, so the increase in length is delta L. Okay. So that increase in length is directly proportional to the original length. Okay, L0. This increase in length is directly proportional to the original length and is also directly proportional to the rise in temperature. ये डेल्टा सिग्निफाई क्या करता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी T माइनस T0. ये डेल्टा L क्या सिग्निफाई करता है? इंक्रीज इन लेंथ, यानी L माइनस L0. Okay, so delta word signifies the increase. So what have we learned is that the increase in length, ये length increase कितना होने वाला है? So that length increase is proportional to the original length. Also it is proportional to the rise in temperature. ठीक है, मतलब तुम जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ना, उतना इंक्रीज इन लेंथ होने वाला है. But it is also proportional to original length. Now why this original length? Now for example, अगर मैंने रेल ट्रैक 10 मीटर का लिया है और वो टेम्परेचर इंक्रीज के कारण इट इंक्रीजेस द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो तुम बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा लेंथ है, इंक्रीज ये तो दिखाई देगा. ओके, बट अगर मैंने रेल ट्रैक 1 मीटर का लिया है, ओनली 1 मीटर का, और उसमें इंक्रीज इन लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तुम बोलेगा सर ये तो बहुत छोटा इंक्रीज इन लेंथ है. सो दैट इंक्रीज इन लेंथ एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेदर इट इज 10 मीटर or whether it is 1 meter. So that increase in length is proportional to what? The original length, as well as it is proportional to the rise in temperature. yahan tak clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now delta L, that is increase in length, is equal to, now proportionality hata rahe. So when you remove the proportionality, there is a constant of coefficient, there is a constant at coming. This constant here is called as alpha. ये proportionality sign नहीं है, ये alpha है. So when I remove this proportionality sign, equal to आया, and there is a constant. This constant is called as alpha L0 delta T. ठीक है? So what is alpha becomes? Alpha क्या बनेगा? It is delta L upon L0 delta T. This alpha is called as coefficient of linear expansion. It's a constant which is a coefficient of linear expansion. Now why does this came into picture? For example, if I'm using an iron rod, मैंने iron का, लोखंड का रेल ट्रैक बनाया है, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उसका इंक्रीज इन लेंथ अलग रहेगा. एंड इंस्टेड ऑफ आयरन इफ आई टेक अ कॉपर रॉड, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उसका इंक्रीज इन लेंथ अलग रहेगा. So it is not only that increase in length not only depends upon the rise in temperature, it not only depends upon the original length, but it also depends on the type of the material used. Every different material has a different expansion that it takes place when the temperature is increased. Okay, so that value is called as alpha. What does alpha signify? It's a coefficient of linear expansion. This coefficient depends on the material. कौन सा material है उसमें कितना expansion होएगा. Okay. So now let's define coefficient of linear expansion. Now it's very easy to define coefficient of linear expansion. ये formula देखो, definition आ जाए. So what is coefficient of linear expansion? It is increase in length per unit original length per unit rise in temperature. तो तुमने definition बहुत easily याद किया. What is this coefficient of linear expansion? Increase in length
per unit original per unit rising temperature. Okay, are you clear with this part? Yes, sir. Okay, Yes. now Yes. let's write the same formula in terms of L. मतलब delta L में नहीं लिखते, delta T भी नहीं लिखते, in terms of L लिखते हैं. Okay, so how will I write this? यहाँ पे टेक्स्ट बुक का सिंबल कैपिटल T लिया टेम्परेचर के लिए, तो मैं कैपिटल T बिकॉज तब बाद में तुम रीड करते हो कंफ्यूजन हो जाएगा. ओके, अब यही फॉर्मूला अल्फा का इंक्रीज इन लेंथ. सो व्हाट इज दिस इंक्रीज इन लेंथ? इंक्रीज इन लेंथ यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, इंक्रीज इन लेंथ. तो व्हाट इज दैट इंक्रीज इन लेंथ? L minus L0. Increase in length is L minus L0. Original length L0. Increase in temperature. Yes, please. Original temperature T0 है और ये डेल्टा T है. सॉरी, फाइनल टेम्परेचर कैपिटल T है. तो बताओ मेरे को, इंक्रीजिंग टेम्परेचर कितना आया? फाइनल टेम्परेचर T है, ओरिजिनल टेम्परेचर T0 है. सो व्हाट इज द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ओवर हियर? T minus T T0. minus T0. T minus T0. This is alpha. Are you clear with this? अब यही फॉर्मूला को रीअरेंज करो, क्रॉस करो. तो व्हाट इज L minus L0 इक्वल टू अल्फा? यस प्लीज. अल्फा L0 T T minus minus T0. ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. अब यही फॉर्मूला में अगर मेरा टेम्परेचर T0, इफ टेम्परेचर T0 इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 होगा, तो ये 0 निकल गया. तो व्हाट डज L बिकम्स? माइनस L0 इधर आया, प्लस अल्फा L0T, माइनस T0 निकल गया. सो व्हाट इज L इज इक्वल टू L0, ब्रैकेट में कॉमन आया 1 प्लस अल्फा T. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेम फॉर्मूला, अगर मेरा टेम्परेचर अलग अलग है, मींस ओरिजिनल लेंथ L1 है when the temperature is T1, फाइनल लेंथ L2 है when the temperature is T2. यहाँ पे ओरिजिनल टेम्परेचर T0 था which is 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे मेरा टेम्परेचर T1 है और T2 है. तो अब फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? लेट्स स्टार्ट विद अल्फा. व्हाट इज अल्फा इक्वल टू? टेल मी. डेल्टा L. L2 minus L1. minus L1. L0 original length L1. L1 delta T temperature change. T2 minus T2 T1. minus T. अब क्रॉस करो, तो L2 minus L1 is equal to alpha L1 T2 minus T1. ठीक है, तो चेंज इन लेंथ का ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, अब इसी को रीअरेंज कर सकते हैं. L2 माइनस L1 इधर आ गया, L1 प्लस अल्फा L1 T2 माइनस T1. L1 कॉमन निकाला है, तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. ठीक है, सो दिस इज अनदर फॉर्मूला. सो तुम्हारे पास तीन फॉर्मूलास तुमको याद रखना है. एक L का, L इज L01 प्लस अल्फा T. एक इंक्रीज इन लेंथ का, L2 माइनस L1 इज, वो डेफिनेशन से याद रखो, L2 माइनस L1 इज अल्फा इन ओरिजिनल लेंथ राइजिंग टेम्परेचर. समझ में आया? दैट्स, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन इटसेल्फ. ओके, एंड इसी को रीअरेंज किया है, माइनस L1 उधर गया और L1 कॉमन निकाला, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है. तो तुमको ये तीन फॉर्मूला याद रखना है. मेनी स्टूडेंट्स ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला या फिर दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला इधर से आ जाएगा अल्फा, तो तुमको लीस्ट फॉर्मूलाज याद रखना है. ठीक है ना, ज्यादा फॉर्मूलाज तुम उसके पीछे पढ़ना. ओके, अल्फा का यूनिट बताओ क्या आएगा? अल्फा का यूनिट, यू कैन मेक अप द यूनिट. मेक अ यूनिट फॉर अल्फा. यस प्लीज. अल्फा का यूनिट, सी दिस इज मीटर, दोनों का मीटर कैंसिल, नीचे डिग्री सेल्सियस है, यानी आंसर क्या आएगा? meter अल्फा का यूनिट आएगा पर डिग्री सेल्सियस. व्हाई पर डिग्री सेल्सियस? दोनों का मीटर कैंसिल हो जाता है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, कैंसिल हो गया. नीचे टेम्परेचर है यानी डिग्री सेल्सियस, नीचे डिग्री सेल्सियस, दैट इज पर डिग्री सेल्सियस. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. yes sir
Aerial expansion में this is the original area A which is expanded. Assume करो मैंने ये A1 लिया है and the new area when the temperature increases the area also increases. Originally area A1 है. When the temperature increases the area becomes A2. A1 area A2 बन गया. ठीक है? So there is an increase in area. ठीक है? This is called as increase in area. This is an increase in area. So the final area is A2. Originally temperature अगर मेरा T1 है and the final temperature is T2. So what is the symbol used for increase in area? Yes, please. Delta A. Yeah. So now define this. Tell me. Increase in area. अभी जैसे हमने लीनियर एक्सपांशन का स्टार्ट कैसे किया था डेरिवेशन का, वैसे ही इसका स्टार्ट बताओ. What is that increase in area? Yes, please. What is that directly proportional to the? Temperature. Very Temperature. nice. It is directly proportional to the Temperature. temperature. Original area. Original area. Original area and directly proportional to the temperature. rise in temperature. Okay. Any questions till here? No, sir. No, sir. So what does delta A becomes equal to? अगर मैंने proportionality हटा के constant डाला, sorry, equal to डाला, I'm sorry, equal to डाला, so there is a constant. That constant here is called as beta. Last time constant क्या था? Alpha. Alpha. Last time constant was alpha. What was alpha called as? Alpha क्या था? Coefficient of linear expansion. Beta क्या है? क्या रहेगा? Coefficient Aerial of aerial expansion. Is that clear? This is a coefficient of aerial expansion. Now tell me, beta का formula क्या है? Delta A Upon Upon A1 delta T. ठीक है? Now define beta. बोलो definition बोलो beta का. coefficient. Coefficient of aerial expansion. Coefficient of aerial expansion. Definition बताओ beta का. Beta का Increase in area. Increase in area per unit Per unit original original area area. per rise in temperature. Very nice. Increase in area per unit original area per unit rise in temperature. Unit बताओ. What is the unit of coefficient of aerial expansion? Per degree Celsius. Degree Very Celsius. nice. मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर दोनों का मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ डिग्री सेल्सियस बचता है. सो द यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस. आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस पार्ट नाउ. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अगर मेरा ओरिजिनल टेम्परेचर T0 है विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड ओरिजिनल एरिया A0 है, तो यही फॉर्मूला बीटा का क्या बनेगा? डेल्टा ए क्या बनेगा? A minus A0 upon A0 T minus 0. T0 यानी 0 है, ठीक है, क्रॉस करो. तो व्हाट इज A minus A0 becomes A बीटा Beta A0, A0. ठीक है. तो व्हाट डज A becomes A0 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस A0 इधर आ गया प्लस हो गया, और A0 कॉमन निकला, यानी क्या आएगा? 1 plus beta. Is beta T. My first formula. Okay. Now the same formula. Original area is A1. अभी मैंने एरिया नहीं दिखा रही है वैसे. अभी मैं सेकेंड फॉर्मूला ये डायग्राम पे दी. Original area is A1, temperature is T1, final area is A2, temperature is T2. अब सेम फॉर्मूला ये वाला बीटा का फॉर्मूला मेरे को बताओ क्या आएगा. यहाँ पे देखो बीटा डेल्टा ए. व्हाट इज डेल्टा ए ओवर हियर? ओरिजिनल A2 minus A1. A2 minus A2 minus A1 upon original area. What is the original area? A1. A1. 2 minus T2 What is the minus rising T1. temperature? 2 minus T1. Now cross multiply once again.
A2 minus minus A1. beta A1 A1 T2 minus minus T1. Okay. Now this minus A1 comes on this side. What is A2 equal to? A1 plus beta A1. T2 minus T1. Now, ये मेरा second formula by the way. So what does A2 becomes? A1 common आया. 1 plus beta T2 minus T1. T2 minus T1. This is my third form. So if you notice it, areal expansion का there are three formulas once again. A is equal to A0 1 plus beta T. Change in area beta original area T2 minus T1. या फिर A2 is equal to. Now this formula is similar to this. Only difference is A1 के बदले A0 आया and T2 minus T1 के बदले T minus 0 आया. Clear? T minus 0 becomes T. Understood this part? Yes, sir. A similar derivation we have for volume expansion. Now I hope you can understand that volume expansion का कैसे करना है. So you yourself can do that. ठीक है? अभी मैं सारे formulas एक बार लिख दूँगा. So what all formulas have we learned? Let's write that first. तो ये पहला formula. मैंने बाद में क्या कौन सा कहा था याद रखने के लिए? Increase in length. What is an increase in length? Depends upon alpha, LO original length, Hello. rising temperature. ये rising temperature is calculated. As per textbook ही लिख रहा हूँ terms. ये हो गया first linear expansion. Now tell me the second one, areal expansion. इसका एक और फॉर्मूला याद रखने बोला था. What is final length equal to L1 1 plus alpha T. Alpha T. T. Alpha यानी alpha T2 minus T1. ठीक है? Okay. तुमको ना एक्चुअल में सिर्फ मेन ये फॉर्मूला याद रखने के लिए. What is increase in length? Alpha original length and rising temperature. Rising temperature क्या लिखोगे? T2 minus T1. ठीक है? तुमको मेन ये फॉर्मूला याद रखना. ठीक है? ये वाला मेन फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूला में अगर मेरा ओरिजिनल टेम्परेचर 0 है तो T2 माइनस T1 का सिर्फ T हो जाएगा. ओरिजिनल लेंथ L0 हो जाएगा. L0 इधर आ गया तो ये फॉर्मूला आता है और L1 इधर आके कॉमन निकला तो ये फॉर्मूला आता है. तो तुमको मेन टारगेट ये फॉर्मूला पे करना. ठीक है? तो उसको यूज करके तुम बाकी दो फॉर्मूलाज याद रख सकते हो. नाउ टेल मी एरिया के सिमिलर तीन फॉर्मूला बताओ. What is A equal to? A0 plus 1 plus beta T. Beta T. Now change in area का फॉर्मूला बताओ. What is A2 minus A1? Increase in area is proportional to the beta coefficient of area expansion. 1 T2 minus A1 Original area A1. Temperature difference. What is the temperature difference? T2 minus T. Okay. Then the final area A2 क्या आएगा? A1 A1 is common. A1 1 plus plus beta T2 minus minus T1. ठीक है? Now further. अब मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ. Start. What is V equal to? V0 V0 1 plus Zero plus minus gamma plus T. gamma T. चलो कॉमन सेंस यूज किया. वेरी गुड. नेक्स्ट. V2 minus V2 V1 minus T2 V1. minus Increase in V1 volume. Increase in volume is gamma gamma V1 original volume. minus T1. Original T2 volume. minus T1. T2 minus T2 minus T2 T1. minus T1. Are you clear with this part? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. Final V2. What is V2 equal to? V1 V1 1 plus plus gamma gamma T2 minus T1. T1. ना यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया.
Sir, mute हो आप. Sir. Sorry for that. We are finding a relation between coefficient of linear expansion, coefficient of radial expansion, coefficient of volume expansion. इसमें और इसमें we are finding a relation between them. Okay. So next topic is relation between coefficient of expansion. अच्छा ये सारे derivations exam के लिए important है. Now to find a relation between these two, ठीक है? To find this relation, I'll start with like this: original length. What is this formula? Final length. अगर मैंने एक square consider किया हुआ है, this is a square, L0 is the length, तो area A0 हो जाएगा. What is A0 equal to? Length का square ना, L0 का square. When the temperature increases to T degree Celsius, तो length becomes L, so area also becomes A. Are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now area becomes A. So now, what is the length? What is this length going to be? L का formula क्या है? This, what is L is equal to? L0 1 plus alpha t. 1 plus alpha. alpha t. Okay, that is the final length is original length 1 plus alpha t. Now मेरे को area में interest है. What is area by the way? Area is nothing but the square of the side. Final area A is nothing but the square of the side here, यानी L square. Are you clear with this? Yes, sir. Yes, But sir. L खुद क्या है? L0 1 L0 plus 1 alpha t. plus 1 plus alpha t alpha का t. square. ठीक है, whole square. So L के बदले मैंने L0 का फॉर्मूला पुट अप किया, the whole square. Now let's do the square. L0 का square 1 plus alpha t का whole square. Now this is A, area. Now what is L0 square signify? L0 is the original length. उसको square किया तो what does that become? Original area. What is original area equal to? Original length का square. तो L0 square यानी क्या हो जाएगा? A0. ठीक है? What is 1 plus alpha t का whole square? What is A plus B का whole square? A square plus 2 alpha t plus Plus alpha t. alpha t square. Alpha alpha square t square. T square. यहाँ तक क्लियर हो गया? So what I have done is original length का पहले फॉर्मूला लिखा. That is final length का. What is final length? Original length 1 plus alpha t. That we have already derived in our previous equation. बाद में area is what? Length का square. Square किया तो L0 square 1 plus alpha t का square. Okay. Now here alpha का value ना is approximately 10 raised to minus 6 तक आता है. Alpha का value है ना, order of alpha is 10 raised to minus 6. So alpha itself is small. ठीक है, यानी 10 raised to minus 6. अगर alpha 10 raised to minus 6 order का है और उसको मैंने square किया, तो now tell me क्या होगा? 10 raised to minus 6 का square क्या होता है? 10 raised to minus 36. नहीं, 10 raised to minus 6 है. Alpha का order is 10 raised to 10 minus raised 6. to minus Square 12. किया, 12. minus 12. 12 आएगा. Clear? 36 नहीं, 12 आएगा. Now 10 raised to minus 12 itself again becomes very small. So alpha itself is small. So alpha square is negligible. बहुत छोटा वैल्यू है. So alpha square t square is neglected. क्यों neglect किया समझ में आ गया? ये वाला. तो हायर पावर्स ऑफ अल्फा का, बीटा का या गैमा का हायर पावर्स होता है ना, मतलब ये चलेगा. हायर पावर्स यानी अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज़ टू 4, ऐसे वाले हायर पावर्स नहीं चलेंगे. इज दैट क्लियर? तो Yes, हायर sir. पावर्स आर निग्लेक्टेड. ओके, सो इसलिए वो निकाल दिया. सो व्हाट डज ए बिकम्स?
A0 1 plus 2 alpha t. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. But we already know the formula for A. What is A is equal to 1 0 1 plus. Beta t. Now compare and tell me what is the relation between alpha and beta. Compare and tell me what is the relation between Beta alpha is and 2 beta. alpha. Beta is equal to Twice of alpha. Beta is equal to twice of alpha. समझ में आ गया डेरिवेशन? Yes, Yes, sir. sir. नहीं समझा तो डोंट वरी, हम लोग और एक करने वाले. So here the original length is L0 when the temperature is 0 degrees Celsius. Final length of the cube. Okay, final length is L. Are you clear with this part? When the temperature is T. Any questions here? This is a cube. I hope everyone can understand this. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we'll start in the Yes, sir. similar manner. What is L is equal to? L0 1 plus 1 plus alpha Alpha t. t. यहाँ पे ओरिजिनली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, बाद में फाइनल के लिए टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. now मेरे को वॉल्यूम में इंटरेस्ट है. बी में वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? L cube. वेरी गुड. L cube. जैसे एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एल स्क्वायर, वैसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल क्यूब. सो अगर एल क्यूब किया बट एल इटसेल्फ इज दिस टर्म, यानी क्या आएगा? L0 1 plus alpha t 1 plus alpha t Whole the whole cube. now let's apply the formula here. L0 cube 1 plus alpha t का whole cube. I hope everyone knows whole cube formula. What is a plus b the whole cube? 1 cube. A A cube. cube A plus cube यानी 1 A cube. cube One plus one. 3a square b. 3a square b. B b square square plus plus b a cube. 3 1 square यानी 1. b यानी alpha t 3 alpha t. plus 3ab a square. alpha square. 3 Alpha square t. plus b cube. B cube यानी Alpha cube t Alpha cube. cube t cube. okay once again. याद है मैंने लास्ट डेरिवेशन में क्या बोला था? Alpha cube t cube is negligible. Alpha is small. Higher values negligible. Higher powers are Negligible. higher Negligible. powers of alpha are negligible. So therefore, alpha square t square and alpha cube t cube is neglected. उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे. तो what does b become? अच्छा L0 cube क्या होता है? L. V. Yes. V0. B0 1 plus यहाँ पे क्या आएगा? 3 alpha t. ठीक है. बट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मालूम है? B0 1 plus gamma t. 1 plus gamma t. So now compare and tell me what is the formula. What is gamma equal to? It's to 3 Gamma is alpha. 3 Size of alpha. alpha. So what have we just now proved? We just now proved that beta is twice of alpha, and we proved that gamma is Thrice of alpha. Rise of alpha. ठीक है. So अगर ये दोनों रिलेशन को इक्वेट करें तो alpha becomes Beta Beta by upon 2. 3 by Gamma by 3. ठीक है. So you can remember it like this. That is your choice, or you can remember it like this. Any questions here? No, No. ठीक है. तो what is temperature? Temperature क्या होता है? It measures the degree of hotness. मालूम है ना? Temperature is the measure of degree of hotness. What is the property of an heat? जो तुमने 10th standard में पढ़ा था. Heat का property क्या है? How does heat transfer takes place? Heat transfer किसके बीच में होता है? Yes, please. Between Hot
Hot Cold object. Yes, very object. nice. Between the hot Cold body object. and the cold Principle body. of So heat heat extraction. transfer always takes place from the higher temperature to lower temperature. Okay, till the temperature becomes equal. Okay, so this is a definition. Page number 115. What do you mean by the word thermal equilibrium? Thermal equilibrium का meaning होता है when all the bodies attains the same temperature, same degree of hotness achieve करेगा ना, that is called as thermal equilibrium. Page 115 पे definition mark करो. Heat supplied to a substance increases the kinetic energy of the molecules. That is what I have explained to you. Why does this body expands? So heat supplied to the substance increases the kinetic energy of the molecules or atoms of the substance. The average kinetic energy per particle of a substance defines the temperature. Average kinetic energy, या फिर we call it as the internal energy. ये higher standards में ये word use करते हैं. Kinetic नहीं, internal energy बोलते हैं. तो टेम्परेचर क्या होता है? When there is an increase in the internal energy, then the temperature increases. Okay. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. अच्छा बाय द वे ये टॉपिक निकाल दिया तुमको. 7.3, 7.4 और 7.5, सॉरी 7.3 और 7.4 निकाल दिया है. तो डायरेक्टली यू हैव थर्मल एक्सपांशन. जो तुम्हारे प्रीवियस पोर्शन में था ना वही रखा है. तो जो नया पोर्शन है एड अप किया है वो निकाल दिया है. ठीक है. वैसे 7.4 का आइडियल गैस इक्वेशन पेज नंबर 120 पे आ जाओ. पेज 120. Charles law, remember? Yes, sir. Charles law, Yes, Boyle's sir. law, pressure law, Yes, sir. and ideal gas equation. तो ये सारे वही laws है. So you can just, मतलब तूने already chemistry में पढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें से हटा दिया. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next Yes, lecture sir. will be continuing with the numericals. Now, few things I'll just like to announce. थोड़ा lecture